Theatre is indeed an art that helps you express yourself, tell your stories and that of others. Today, on the occasion of World Theatre Day, ladies and gentlemen, we have three eminent personalities from the theatre of Orissa with us. Rohan Yadav, Dipanwit Dasmahapatra and Samarpita Das. Thank you so much for joining us today here. We'll start the conversation with you guys telling us when did you start theatres, how was your journey in theatre so far has been, and what was the driving force that drove you towards the art of theatre? We can start with Samarpita, you. Yeah. So thank you for inviting us. I have to say, since childhood, I was a very filmy. I was attracted to art in some form or other, maybe dance or painting or enacting scenes. So eventually I was gonna do a movie in 2019. 2020 I was gonna do a movie, so I was prepping for it and lockdown happened. And since we were completely shut down from the world, my team actually I joined Jeevan Rekha Theatre Group. I had known someone who was from the group herself, so I asked and I joined. Back then we used to do it over phone calls. Abhinna sir, who is the director of Jeevan Rekha Theatre Group, on phone call, he gave me theories about Odisha to know my state better, and then he would ask me to do monologues, ask me to read out the script, ask me to prepare something or other, some workshops, something like that. So it happened for 4 or 5 months, and then I landed up with my first play, Sita, in 2021, which was for the Purva Ranga Mancha, and we had NSDNs, and so I had to stand like a statue for 45 minutes without blinking, which I thought would be very, very difficult, but I could do it. And about you, how did your journey began in theatres and how it has been so far? I came to Bhubaneswar back in 2014 for my BTech. Then I got to accidentally I dine Rabindra Mandap jaithili, so I watched a play, theatre group called Uttar Purush. So I was very much fascinated ki ei art form ta kon, kahi back in school days we used to do like a play in a year, just yearly gote annually function. I was not that fascinated towards acting and all. But after watching a full-fledged theatre play with a packed audience, and after the show complete, a standing ovation, and that got fascinated, and I think say art form ta mate explore karibar thila ki this is what eta ote kick debab se jinsa ote milala. So then I started joining the theatre group, and sethi Uttar Purush theatre group mu join karthili 2014 re after completing my workshop. Sethi till 2017 I was there, and 2018 re Jeevan Rekha Theatre ame start kolu, and now I'm still there. And Rohan, you? Yeah, so in life you get initiated into certain art field or any form of thing by somebody. So my initiation came from Dipanwit Dasmahapatra, and I have another senior, Radhakrishna. They both introduced me to the theatre. They were actually a part of the theatre group, so they asked me to come and join, because you will explore, you will learn more things, you will go back to the college and train the students. So that's the whole idea. So I came here in the first play. I hadn't watched any kind of theatre play as far as I remember till then, but I was given a chance, and by luck, I would say by luck, certain amount of talent I would say also, but I was given a parallel lead along with him in that show. So after that, theatre ta gote nisa lag gala. So it's been 7 years after that. So it's been 7 years. Yes. So you guys are the ones who are deeply rooted with the art of theatre. So off the camera we were talking about the history of theatre. Yeah. So if you could enlighten us with how it started, you talked about how during the colonization period it shifted to the elite class people. So what was the transition, and about the history of theatre? History of theatre in India? Yeah. Okay. I would not go back to dates of like Natya Shastra and all. It is very, but what we were talking about then was why theatre as an art form dipped at certain point of time. It's my personal view and what I have studied
It's because and during the colonial period, before, like when the East India Company came and all, so after that there was revolutions against Sati and this kind of thing by Ishwachandra Vidyasagar and Raja Ram Mohan Rai, and so they used theatre as a tool to enhance people's mind, to train their minds to like they picked up those topics based on Ramayana, Mahabharata, and a lot of things were there as well. But when like British really took up the charge, the theatre as a form shifted towards the elite group society. So the tier 3 cities or the tier 2 cities that we are talking about were they were not able to watch theatre as a form. So then shift hegala to, we have this beautiful art forms in Odisha like Palla hegala, then better kahibe jatra asigala, then बहुत सारे एमती आर्ट फॉर्म्स गुड़ा अच्छी जोड़ा कि लोक मान को बहुत कनेक्ट करिला एंड गाँव रे लोक माने राति राति बसी कि जिनस गुड़ा देखले तांको बहुत मजा लागला बट थिएटर मिस्ड दैट kind of because shift हे येतला रॉयल लोक माने आस्तले सेटी with wine and they used to watch it and the plays गुड़ा usually would be like an elite people तांकर wife or those husband those artists जो मैंने इंग्लैंड रे शोज करते हुए those तो it actually changed gear. The mindset of the roots of the India after the British also went off. So mind to change about it will take time. So it's a geopolitical situation. So 50-60 years is nothing. If you see the history of theatre, it's been 5,000 years. So 50-60 years, it's not a huge time that कि theatre in India कहीं के साथ boom ये पर्यंत कहीं के टिकट डिम माने है जाई चे आजिका डेट रे. But it is reviving state रे अभी अच्छी and it will it is getting its gear up. And I think it will revive very soon, and after 100 years, 150 years, with the efforts that we are putting into it, the limelight that we are getting, I'm pretty sure after 50, 100 years, it will be again at its top. So Dipanwit, my question to you is, after immense success of Daman and Pratiksha, I feel your presence has been a little less in theatre. So are there any exclusive news that you want to make? That are you up with any theatre acts or anything in the future? Theatre as an art form, what excites me, it's not about acting. You said कि I was not actively participating, but I was there. जो plays I was there. I was backstage. Like last night I was there in Sambalpur. I was not acting. I'm in backstage, set, property and all. That excites me. Besides that, like I'm not demeaning, but सिनेमा रे कोन हो कि शॉर्ट दला भितर से टाइम टा बहुत बोर लागे मते लाइक यू हैव डोंट सी तुम बसे के रखंती बट थिएटर इज नॉट दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग लाइक तुम एक्टिंग करनो यू हैव टू डू द म्यूजिक यू हैव टू डू द प्रॉपर्टी सेट इट्स लाइक ए कंबाइंड आर्ट फॉर्म तो आफ्टर दमन एंड प्रतीक्षा कहले मु आई वाज देयर बट मु एक्टिंग करनो थली बट एप्रिल रे हमें करूछु शो दिल्ली रे तो एप्रिल 8 रे जो माने फ्री अच्छी दिल्ली रे प्लीज कम टू आवर समुद्र राजहंसी आम 3 जन एक्टिंग करूँ दैट विल बी आवर सेकेंड शो थर्ड शो fifth show okay fifth show we did it in Bhubaneswar we did it in Bangalore and now it's in Delhi 2 shows in Bangalore we have another 2 shows in Delhi and next amara and जदि मो विषय पचारछन्ती तो May 13th रे मैं आ गोटे शो करछु रविंद्र मंडप रे आषाढ़ के एक दिन मोहन राकेश का रचित and aku direction dochunti Abhinay Rautray presented by Jiban Rekha Theatre. There are a lot of exciting actors there and ta bisay details ame Jiban Rekha Theatre page ru jaldi announce karibu it will be soon. Talking on the same grounds, what do you feel are the differences between shooting a film or a movie per se and then enacting a play in theatres? What are the major differences that one can feel? two different grammars all together मतलब माने लोक बहुत भाबंती कि इट्स लाइक थिएटर रू आछि तो ही कुड बी अ गुड सिनेमा एक्टर दैट्स अ मिथ देयर आर मेनी थिएटर एक्टर्स हु आर गुड सिनेमा एक्टर्स बट बहुत एमती भी अच्छन जो माने से शिफ्ट हे पारंतिन लाइक मी मूवी जब स्टार्ट करथिली फ्रॉम छोट छोट यूट्यूब वीडियो जे हला तो आई वाज लाइक कि थिएटर जहाँ करिवार अछि सही करिवार अछि बट इट्स नॉट लाइक दैट and I'm very sorry कि people एबे का डेट रे भी ओडिसा रे एमती थिएटर हो चलो माल भाबु चंदी कि it's like what we are doing in cinemas we could do it in theatre but theatre has some basic language we have to follow that so
थिएटर और सिनेमा कंप्लीटली डिफरेंट. आई मीन दीपान्वित भाई ऑफ कोर्स ये सीनियर एंड से बहुत भलरे कहले. फ्रॉम माय छोटो एक्सपीरियंस आई कुड टेल थिएटर इज अ वेरी डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म where you have to do everything on your own in one take. तमर बड़े पेस्ट बाहरी गला सेटा जीवनी तुम कहीदेल स्टेज पर सेटा जाई पारिबनी. तमर तम को एक्टर र केते ही भल अच्छी जे तुम सेटा को इम्प्रोवाइज करके आगो को नहीं पारुछ. while in acting while shooting a cinema तुम रीटेक नहीं पारिबो बट सेठी ना लेस इज ऑलवेज मोर. एठी तुमको देखेबा को पड़िबो थिएटर बिकॉज तुम सपोज रविंद्र मंडप रे अछ 800 सीटर बहुत दूर अच्छी तुम जदि खाली करदेल लोक जानीपारे तुम कहल तुमको भल से मुंड करिया को पड़िबो. मते बहुत गाली दियंती दी जण मु कहबी मु टिके लेस करिवे करे देखा जीवनी समर्पिता लोकों को देखा जीवनी तू हाँ कहूचु बट इफ यू डू इट ऑन कैमरा लोक संग संग बारे ओवर एक्टिंग कहीं करची. Theatre as an art form is flourishing in other states as well, Kolkata, Maharashtra. So what is the status of theatre act in Odisha? What do you feel? Like in comparison to other state जदि आपण कहिबे तो like I am very sorry कि भुवनेश्वर हम पाखरे 3टा ही ऑडिटोरियम अछि. तो बहुत सारा फैक्टर्स अच्छी. इट्स नॉट लाइक ऑडिटोरियम जो थिएटर ग्रुप्स माने काम करछंती बी लाइक ऑडियंस से कनेक्टिविटीटा आस्ते आस्ते डेभलप होउची. काहेकि बैक इन जब मु स्टार्ट करथले बैक इन 2014 सेबे जो स्टेट रथला इट्स प्रीटी मच माने बहुत ही भलो स्टेट रे अछि. एबे एमती के रोहन कहला कि इट्स फ्लोरिशिंग एंड आउ किछि वर्ष पर एक सर्टेन लेवल को आसी जिवो. बट द हमको से फैक्टरटा देखिया पड़िबो. व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स जोटा हमको मेजर ड्रॉबैक्स कोड़ा अच्छी. लाइक जमी आप कोलकातार एग्जांपल देले कोलकाता आप प्रति 5-10 किलोमीटर गोटे ऑडिटोरियम छोट ऑडिटोरियम बड़ ऑडिटोरियम पाइबे. लाइक आप बुक माई शो देखिए देयर आर डिफरेंट वेन्यूज बहुत सारा ऑप्शंस अच्छी. तो देयर आर वेरी जब आम गोटे आज गोटे प्ले करने डिसाइड करूँ ए मार्च मस हो सो 3 मंथ्स आम डेट्स ना देयर आर लाइक वन वेन्यू रविंद्र मंडप भंजाकला मंडप ओडिसी रिसर्च सेंटर. तो आम गोटे प्ले करने बाहरचु तो शोज करने रिपीट शो करने ट्राए करूँ तो आमको वेट करा पड़े फॉर 3 मंथ्स. तो सेटा गोटे मेजर ड्रॉबैक्स आउ लाइक ऑडियंस मानकर इन्वॉल्वमेंट सेटा गोटे बहुत ही बड़ लाइक जब ऑडियंस माने थिएटर को सीरियसली नेबा स्टार्ट करेंगे सेबे ही से ब्रिजटा हो पार. एंड आउ गोटे मेजर ड्रॉबैक्स जो थिएटर ग्रुप्स मैंने काम कर भी से सीरियसली काम करवा दरकार. लाइक समस्त को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं गले हेनी. लाइक आम जहाँ भी करदेबू मंडप माने स्टेज ऊपर दैट्स कॉल्ड थिएटर सेटा हो पारबनी. थिएटर हैज सम लैंग्वेज यू हैव टू फॉलो दैट एंड से कनेक्टिविटी रहा दरकार. आई थिंक ये केतरा जिनस को फॉलो कले से रिवाइविंग स्टेजटा आहरी जल्दी आसीजिवो. जमती आपण कहले कि ओडिया ऑडियंस मानकर भी केते इन्वॉल्वमेंट रोची दैट आल्सो एक्ट्स एज अ मेजर फैक्टर कि रिवाइवलटा केते जल्दी हे पारिबो ओडिसा रे. सो बाय फार हाउ हैज बीन द रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस साइड? ता पूर्व जस्ट पूर्व पॉइंट रे मैं ऐड करिवे बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द थिएटर ग्रुप्स दैट दैट्स इन ओडिसा. पाखापाखि आई थिंक देयर इज 150 to 160 थिएटर ग्रुप्स दैट आर लिस्टेड. तो जो श्रेणी रे जो स्तर आम नाटक करचु लाइक आमको प्रथम बुझा पड़ो ऑडियंस गोटे देखा इंटरेस्टेड कि जदि नुहे देन डोंट डू इट. सिंपली डोंट डू इट एंड डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग. ओके प्रथम थिएटर को आमको बुझा पड़ो. द थिंग इज दैट कि अगेन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगेन लाइक समहाउ बांग्लादेश थिएटर दे अंडरस्टूड दिस आर्ट फॉर्म. देन बांग्लादेश रू पीपल जब माइग्रेशन करके बेंगल को आसिले बेंगल गॉट्स इट्स लाइक फुट होल्ड ऑन द आर्ट फॉर्म. बेंगल रू शिफ्ट होकर ओडिशा को आसिया देयर हैज बीन नो माइग्रेशन सेपट एरिया. तो से आसवा को वी नीड टू लर्न व्हाट काइंड ऑफ थिएटर वी आर डूइंग एंड वी नीड टू लर्न व्हाट इज थिएटर फर्स्ट. सो few people have mastered it, a few people are still to master it. So we are in the situation. Coming back to your question of the audience response, I have personally seen in this 7 years that the audience base has completely changed. आगुरु लोक आसुतले. I have done shows, मोबाइल बाजिबो साई राम साई श्याम गीत बाजिबो. We were doing shows, पान खाइबे हाई मारिबे सोइबे उठिकी जिबे. I have seen those shows करछि where people used to read their सौदा चिट्ठा. Exactly. घर को कि आज शो सरला पर ए नै कि जाउछि. बट अरे समुद्र रे राजहंसी रे हम एते स्ट्रिक्ट थिले स्टिल कार गटे हमर रिकॉर्डिंग अछि. देयर वाज अ वेरी इमोशनल सीन गोइंग ऑन एंड मते रिएक्शन दबर अछि बजरू साई राम बाजी आरंभ हो गला. मते हस लागुची मु माने ब्रेक हो जाए.
But over the years mo kahibi ki 2-3 years bitare majorly when we have started this ticketed shows show, yeah. people are very aware, they know that they have invested money, tanka bhasha re bujhaiku padibo. So once they are sitting over there, now these people are different. Now these people are doing reviews, now they are very critical, now they are very silent, they are not getting up at all. Yeah, not at all to koi not at all, paribani, but but it has 80% changed very drastically. Yeah. And it has I can only talk about our shows. आगुरु जेतले फ्री थिला रविंद्र मंडप खोला थिला संध्यारे टाइम पास करिया पे लोक पळे आसले जो ट्यूशन छाडी कि छुआ को कि जहां भी एग्जैक्टली एबे यूथ माने आछंती दे आर गेटिंग कनेक्टेड एंड समुद्र रे राजहंसी आई थिंक मोर देन 80% ऑडियंस वाज यूथ से माने आछंती एबे जो भी टाइप रो हमें सिंस ही सेड कि ऑडियंस को केमिति भलो लागु छी सेमिति टाइप रो प्ले करो एबे हमर ऑडियंस रे एज ग्रुप भी चेंज होबा को लागलानी आम परिका यूथ देखिया को चाहिबनी 60 दशक रे कोन होउथिला दो से टाइम रो राइटिंग से पॉइंट पई बहुत कंटेम्परेरी थिला इंपोर्टेंट थिला बट राइट नाउ व्हाट वी वांट तो सेमिति डिफरेंट टाइप रो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप रो स्क्रिप्ट्स रखिया को कथा डिफरेंट टाइप रो क्रिएटिविटी ऐड करिया कथा जोथि पई कि ऑडियंस भी एंगेज हेबे सो सेटा गोटे शिफ्ट मु देखि जी मु. So it's been some time for all three of you in the theatre industry. Like you said कि youth रे बेसी involvement आसलानी तो तांको हिसाब रे गोटे play आमे design करूछु. So what do you think को प्रकार story तांको बेसी appeal करूची? Is it the relatable stuff or extraordinary things? So what is in hype nowadays in theatre acts? What is the one thing जोटा कि involve करूची youth को बेसी in this art form? एबेका टाइम रे जते थिएटर हैज तार थिएटर मेन होची तार स्क्रिप्ट फिल्म रे भी मेन होची तार स्क्रिप्ट बट थिएटर बेसिकली बिकॉज से जो सब्जेक्ट मैटर ऊपर लिखा जाए दैट यू रेयरली कैन मेक अ मूवी अबाउट इट इज दैट कॉम्प्लेक्स एमिति सिचुएशन करे व्हिच इज लाइक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू लाइक हैव दो स्टोरीज पिक्चराइज्ड इट इज इम्पॉसिबल द थिएटर always had those like strong hold. But the thing is that the language in which it was written आजिकार डायलेक्ट आजिकार लिंगो बदली गलानी तो जो स्क्रिप्ट्स रे से लिंगोस एज ए लिटरेरी बेस हो किंबा कलोकल बेस रे हो जदि कनेक्ट करि पारुची लोक मानको जदि ऑडियंस मानको देन ऑडियंस माने आसी कि बसी कि देखिबे खुशी कि जिबे बट जदि से डायलेक्ट से लिंगोटा नहीं देन दे मिस आउट कि एटा तो 50-60 अमल होता ट्रेडिशनल फॉर्म ये तो आम कथा होनो एमती कि कथा हुए तो दोस रिएक्शंस गुड़ा को आमको काटिया को पड़ो है या रिलेटेबल आर्ट हैज टू बी रिलेटेबल टू सर्वाइव इट इज वेरी सिंपल इट इज द बेसिक एवरीथिंग शुड फॉल इन अ लाइन आई गेस हाउ इट विल फॉल इन अ लाइन इफ यू पुट अ थॉट बिहाइंड इट तमें रैंडम किसी भी कर पारिबनी इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अ प्ले from the actors to the backstage workers to the director to everyone associated they should have their mind into it कि कौन पाई करा होची कौन लॉजिक अछि काहे कि एटा हेले आगु को लोक देखिबे ता विषय रे चार जण कथा हेबे दैट्स अ थिंग इन वी क्रिएटिव पीपल यूज लाइक रैंडम बहुत भलो किंतु रैंडम रे भी गोटे डिफाइंड रैंडमनेस थिबा कथा लॉजिक people need to learn theatre as an individual art form like you can't perform a jatra in Rabindra Mandap and call it a theatre. I'm very sorry कि people are doing that and theatre with a basic language thai. You have to follow that. Like proscenium theatre has some certain grammar. You can't unfollow that. I'm very sorry कि people are doing that and people are like बहुत सारे जिनसे एमती हो जाए ना कि एबे ऑडियंस जो स्टेज रे अछंती they are in a very initial stage कि they are start माने try करछंती what is theatre. यदि आम यही स्टेज रे आम अलग जिनस इनपुट करवा तो गोटे अलग डायरेक्शन मिल जाए भावे यहाँ ही थिएटर बट यहाँ थिएटर नुहे थिएटर हेज ए मैंने से तो बाहर जाए थिएटर देखु ना दिल्ली में शोज देखु ना कोलकाता देखु ना जहाँ भुवनेश्वर अवेलेबल अच्छे से देखुं जो ठीक जिन देखेबानी अलग आर्ट फॉर्म आम जस्ट बिकज आम रवींद्र मंडप रे करूँ थिएटर कहवा दैट हाँ दैट बी रॉन्ग नोशन कि लिमिट थिले क्रिएटिविटी एनहांस करे the theatre ta setipe enhancing art form because it has a limit of the space gote space re proscenium theatre kebal fourth wall break achi to the audience okay so it has some structure ki ame sei space you utilize kariba at least root ta ku dhari ke rakhiba ta upare we let's experimentation art ra haba katha I agree but
किछि तो बेसिक रूट्स रहइबा ना तो थिएटर टा तो डिफाइंड हे जाइछि ना प्रोसिनियम थिएटर टा इतकी स्पेस लिमिटेड स्पेस इसमें तो खेलो उसके बाहर क्यों लाइक सिनेमा हैज द सेम प्रॉब्लम जो माने सिनेमा को आछुंदी से माने बेसिक जानू नांदी लाइक सेटर भी सेटा एटलीस्ट बेसिक टा जानि दे कि कोन होउछि काहे ना आमे तो जाहाले भी गोटे लो लेवल अच्छे कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स तो आमे जदि गोटे अलगा जिंस को आमे ये करबा तो सेटा हेई परिबनी And this is where education comes into hand. सबूर एटलिस्ट आम एबीसीडी तो जानवा कथा से थिएटर हो जाओ कि सिनेमा हो जाओ जदि आम कि न जाणिक आइदर आम पाखे इक्विपमेंट्स अवेलेबल अच्छी ना रिसोर्सेस अवेलेबल अच्छी बोली आम जाइकरी चढ़ी जावा किसी भी करदेवा it might fetch you audience in the short run but then when audience get educated after some number of years they will think अरे मु केते बोका थिली मु जाइके एडा को रियल जिंस भाबुथिली. Talking about the language, majority of the dramas are the translated versions from other languages. So what are the factors that are holding any theatre group to dramatize the classic Odia scripts? अन्य माने करछन्ती आमे भी करिछु but along with that we are doing adapted plays. Very simple jinsa the story needs to travel. Story ra kichhi limitations nahi. Story one jemdi for example talking about this play. This is an Inuit folk tale जोटा कि नॉर्थ कनाडा अलास्का रीजन स्टार्ट होता folk tale से ताको कि गोटे अडाप्टेशन से लोक भीतर प्रचलित है 400-500 years ago. Then सेटा ट्रैवल करके आसला somehow it clicked the mind of Kalki Kikli who is the writer of the play along with Prashant Prakash. They wrote a beautiful story. ताको हमें we like हमें somehow ताको discover कल्लू. We read it, we translated it because why? Because we wanted to make sure that the people get this story. Because आमे तो अडॉप्ट करिचे बोली से स्टोरीटा पास ऑन करिचे जे बनैथिले से जानिनी आज पर्यंत ओडिसा रे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट स्टोरी आइडिया नै दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ the story and we are rooting for those stories and beautiful stories that need to connect to the audience. And I would like to add one point also कि कौन पई आमे केवल इंग्लिश रे ठी कल्लुनी because आमर ऑडियंस ग्रुप को आमे जदि लिमिट कर दबा को चाहिबो कि हमर केवल एतिक जण देखिबे आमे इंग्लिश रे करि परिबो बट सिंस ही टोल्ड जस्ट द वे ही सेड कि वी वांटेड द स्टोरी टू ट्रैवल और ट्रैवल केते बेले करबो जतळे हम रीजनल लैंग्वेज थिबो मु कोन कहूची तमे बुझिले त आसी कि देखिबो सो सेइथ पई वी ट्राइड टू transcreate it. It was not actually translation, it is transcreated by Chinmay Sadangi ma'am. Our group ro Jeevan Rekha Theatre Group. She is the president of our group and is also a journalist. Like she writes columns. Yeah, she has her own magazine. Talking about this play particularly, there are data segments different achi. Well, the writer is describing the story form. जहाँ से लिखी it is purely literary. पूरा literally pure ओडिया रे अच्छी literature is on the floor. जब एक conversations होची in between people, it is in colloquial language जो तरह की we have because it's a mixed culture right now. So we'll have English, we'll have Hindi, we'll have Odia. It's a mixed culture. That's the world we are living in. So we are doing contemporary plays. So we'll have to put it. जी करीब 50 years पर they will adapt it in a different format and that's the beauty of theatre. सिनेमा रे थरे हुए मोड ऐड करी जीवन रेखा जे थिएटर ग्रुप सब बेले लाइक कंटेम्पररी थिएटर ऊपर बेसी एम्फासिस दे आछि एंड मु जब 2014 रु थिएटर स्टार्ट कली आगरे में बहुत सारा ओडिया प्लेस करिछु बट आई एम वेरी सॉरी कि हमें बहुत सारा बहुत एमिनेंट राइटर मानकर प्लेस करिछु मु जब जे थिएटर करिछु मु बहुत कम थिएटर दे छोटे यूथ प्ले राइट कोटे यंग जोटे प्ले राइट थिबो कि ओटे प्ले लिखिछि सेमति होउनी ओडिसा रे यंग प्ले राइट का संख्या बहुत कम हमको एनफ ओडिया स्क्रिप्ट भी मिलू जोटा आम नहीं के कंटेम्पररी बेस किसी करि पारिबु लाइक आम सेथि शिफ्ट करू छटा नुहे वी लव स्टोरीज कहीं इंडिया रे बहुत सारा लाइक आम हयवदन कलु गिरीश कर्नाटकर जोटा बहुत इंडिया सारा है आम कन्यादान करिछु कमला करिछु चुहल करिछु एबे आषाढ़ के एक दिन करिया को जाउछु देयर आर क्लासिक प्लेज से स्टोरी गुड़ा सब लोक पाखे पहुँच सारी इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन आम केमती प्रेजेंट करूछु तो आम अडॉप्टेड प्ले भी करूछु आम ओडिया प्ले भी करूछु एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड सम गुड ओडिया स्क्रिप्ट्स बहुत ही सुंदर राइट अप तांकर गोटे प्ले थिला दुईटे सूर्य दग्ध फुलकुनी इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम बट वी हैव डन 70s लिखा थिला बाय विजय मिश्र हाउ व्हाट अ वंडरफुल प्ले से भलिया लेखा सेबे लिखि परचंदे 1970s बट आई एम सॉरी बट 2022 द प्ले राइट्स आर अनेबल टू राइट दोस काइंड्स ऑफ प्ले माने मु लिटरली कोच इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट्स दैट आई हैव एवर रेड
माने ओवरऑल इंडिया रे भी मुझे जदि कंपेयर करी इट्स वन ऑफ द प्लेयर बट सेति की इमेज मिलीनी से राइट बिकॉज ओडिशा इन अ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हैज नॉट रिवाइव्ड तो बेंगल को प्रायोरिटीज प्लेयर्स मान को प्रायोरिटीज दिया ही कि बॉम्बे देन बॉलीवुड हो गला तो थिएटर तंकर एज अ स्टेपिंग स्टोन ऐड हो गला तो सेठी टिके बूम हैला कि दिल्ली बिकॉज ऑफ एनएसडीज होई तो ओडिसा रे से बेस्ट नाही तो प्लेयर्स मान को से एनहांस्ड मिलिनी एक्सपोजर मिलिनी से माने सिखि नाहंती बट सेटा बेस लोक बुझंतनी कि से प्लेयरिट जे लेखुची से लोकटा ही से फर्स्ट पर्सन सी ही जदि नाही हम से रिसोर्सेसटा ही नाही तो आमे आमे तापर डायरेक्टर तापर एक्टर्स आमे थर्ड स्टेज को आसु तो सी ही जदि नाही तो आमे केमती था आमे केते पिटा हमर हेले किछ परिबे टू दैट आमे जीवन रेखा थिएटर बहुत गोटे सुंदर प्रयास करछि लाइक 6 मंथ्स रो गोटे लॉन्ग वर्कशॉप करछि प्लेरेट वर्कशॉप व्हिच इज स्टिल कंटिन्यूइंग so we have 10 to 15 people on board and they are submitting scripts in between bhal laguni corrections chalchi so I think at the end of this workshop 6 months joda May April balku hei jibo and we will have at least 2 to 3 scripts which are handy jaku nei ki ame agu ko future re काम kari pariba but script ru play haba ko lagi jibo 2 barsha that's the time length gote darkar pade gote jinsa haba pa jemdi conversation re the most important thing about it is the script is the basic as you said so jebe apna mane nijo personal choice korchandi ki I am comfortable in doing this or not so what are the factors that drives you towards one play it's the story of course but what are the other factors that drives you to do that if the team if the directors love it if other actors love it I will help as a member I will do everything around it but I may not be the right person to present it to the people because I am the salesperson I am an actor I am a salesperson correct mu convince na product upar mata sell kemti karibi ni kintu I will make sure that ki other people manakar jodi sales korchende I am supporting them so that's my thing I believe in first time reading वो first time read करके जान दिए कि एडा मते भल लागुची ना भल लागुनी सेम मते अभिनव सर थरे पचारले तू केमते डिसाइड करछु तते एडा भल लागुची ना भल लागुनी कल सर पढ़ी दउची मते पढ़िला परे जदी लागुची कि किछि तो गोटे अच्छी चैलेंजिंग मे बी बहुत डिफिकल्ट मे बी मु करि परिबी मे बी एमिति मु केमती मु बिल्कुल नुह किछि तो गोटे थिबा दरकार जे मते लागिबा कि हम करि दे माने करिबा दरकार मु मते बहुत स्क्रिप्ट्स पढ़ी आमे माने लॉकडाउन सारा खाली स्क्रिप्ट्स ही पढ़छु मु बहुत स्क्रिप्ट पढ़ी छी बट मु दीटा प्ले पर्यंत करछि I hardly choose in theatre because of a person called Mr. Abhinna Rautray मु जेबे भी थिएटर स्टार्ट करी छी ऑलवेज सर कहती कि एटा स्क्रिप्ट मैं करूछु यदि मु टाइम अवेलेबल था तो ए रोलटा करूछु मु केबे जे सर को कहनी मते करियर अछि आई वो चूजी सिनेमा को नहीं की बट थिएटर रे जानी छी कहीं तांका अंडर आई इट्स क्लोज टू 20-25 प्ले मु करि सारलेनी तो आई हैव ए इमेंस फेथ ऑन हिम लाइक सी जदि कही देछन तो करू मु कर दिए सेटा मु जानी छी कि सी कोन पई एटा कहिसंती कोन भाबी केटा कहिसंती बीट ए लीड रोल बीट ए पैरेलल रोल बीट ए स्मॉल रोल आई गॉट इट if he is directing like Abhinna Rautray as a director I can say script got it stage रे he will completely break it to different हमें पढ़ी तो है ये तो किछ नथिला एमती तो हमें visualize भी करना तो he will completely break it on Dipanwit bhai no so yeah so that he's yeah talking it's true about exactly during Sita everyone backstage told me तू भरोसा कर नहीं दीपान्वित भाई पूरा अलग कर देबे तते रहिया को पड़िबा सुड़िया को पड़िबा तू जो फॉर्मेट रे करछ सेटा आसीबानी काम रे बदनाम करनी ना बदनाम नो I would say like the very first play that I did गोटे छोटे इंस्टेंस हेतिला जणे आसिके तांको जतळे में जस्ट बिफोर द माने स्टेज परफॉर्म हला पूर्व हार्डली थिला 2-3 आवर्स स्टेज पिट आउतला हेतल जणे कहला रे तू जो कैरेक्टर करछ सब बेले मते से प्ले भले लागे लाइक कि से कहले कि अरे 3 मास तक प्ले हेतिला से कैरेक्टर जहाँ तो से लागुची एटा से लागुची कहि देले हला तो मो फर्स्ट प्ले थिला तो सी गले गले गोटे सेट रे बसिले किछि कथा हलेनी आसी काली कहले कि मुडी अलगा करबी 5 मिनिट्स बिफोर द प्ले मुडी अलगा करबी स्टेज को गले मो फर्स्ट सीन टोटल भाबिले अच्छा ही करछनी कोन काने मते कॉमिक करियर थिला बट सी कॉमेडी करछन तो मु कोन करबी तो फर्स्ट सीन आई टुक दैट पूरा से लेंथ नेली कि अच्छा करूचंदी कोन पूरा देखिली देन थर्ड सीन रो देन तापर गोटे रिदम बसिबो को आरंभ हला सो दिस थिंग्स हैपन this happen and this is a very bad exercise for an actor कि सामने वाला एक्टर को तो मैं अनकंफर्टेबल कराइबो विद इम्प्रोवाइजेशन मते अनकंफर्टेबल ब्यूटी ऑफ लाइफ थिंग ना किछ भी हे जाय ना प्ले रे that's the beauty of stage has there been any situation on stage
where you know something else was practiced and something else was happening. Every That's the magic of live shows. तमरे आइदर तमे फंबल कर दबा बेले बेले नल तमे ब्लैंक आउट हे जबो ई सब नेचुरल जिंस इट्स नॉट अ साइन ऑफ एनी बैड एक्टर और व्हाटएवर जनरली no that's a sign of a bad actor the audience जानी पड़छु हां audience जानु नहंती Then that's okay. yeah but as human beings तमे जत्ते भी प्रैक्टिस करथा हमें 2 मास प्रैक्टिस करू और लास्ट 2 सप्ताह तो 12 घंटा लेखे प्रैक्टिस करू स्टिल किछ ना किछ हे जाए बट द ब्यूटी से ना तमर को एक्टर्स सहित केते रैप अछि तमे केते ही अच्छा स्टोरी भितरे केते इन्वॉल्व अछि तमे जदी स्टोरी को भले से बुझी देइछ तमे जानि परिबो तम कैरेक्टर तमे नहीं परिबो इट हैज हैपेंड टू विथ अस आल्सो गोटे बहुत रीजन अछि मेन होछि फाइनेंस तो हमकु सते आगुरु इट्स नॉट पॉसिबल दैट विल गेट स्टेज ता पूर्वरु कि 2-3 डेज हम स्टेज रिहर्सल करबा विथ ऑल द स्टेज प्रॉपर्टीज विथ ऑल द हैंड प्रॉपर्टीज विथ ऑल द कॉस्ट्यूम्स रेडी जस्ट फाइनेंशियल सिचुएशन सेमती सराउंडिंग रे थिएटर ठीक नहीं कि हमें करि परिबा जब हमें जेतबेले स्टेज को चढ़ू इट्स ऑलवेज द वेरी फर्स्ट टाइम लाइक अपन बाहर स्टेट करता कहले फॉर एन एग्जांपल बाहर पीपल माने कोन करंती 2 दिन बुक करंती फर्स्ट दिन टेक्निकल रिहर्सल करंती दे यूज्ड टू डू द सेम थिंग विदाउट द ऑडियंस एंड नेक्स्ट डे विद द ऑडियंस सो आमे कोन करू आमे गोटे दिन बुक करू आमे जाओ परफॉर्म करू दैट्स इट आमे जानो था लाइट टाइम ऊपर केते बेले पड़िबो को लाइट पड़िबो आमे किछ जानिनो तो आमे अडॉप्ट करू प्ले मझिरे हैव सिचुएशंस लाइट गोटे पैच रे न थाए बिकॉज टेक्नीशियंस माने को सेति के फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाउ नहीं तो टेक्नीशियंस माने सेति के 5 डेज 10 डेज हम सहित प्रैक्टिस करिबो नहांदी दे आर कमिंग फॉर 2 days 1 day कि 3 days every theatre group this normal situation just not limited to our group everywhere तो समान जति के अडॉप्ट कर 3 I mean we are involved as an actor or as director we are involved for like 2 months more than 2 months and समान just for 5 days 10 days the differences तो आसीबो बेले बेले डायरेक्टली ऑन स्टेज हमको प्रॉप मिले ऑन स्टेज प्रॉप एटा तर पई एबे आसिला बिकॉज़ बहुत जिंस बनेबा को भी टाइम लगे फाइनेंस हे जाऊ people work effort केते लोक काम करिवे गोटे गोटे जिंस पई तो से माने they are doing out of love out of passion तो एटा पैशन बे गोटे लिमिट अछि तो बेले बेले एमती स्टेज ऊपर जिब्बा को तुम दे देबे एटा को नहीं कि यूज करो आगे तो टाइम लगे किंतु तुम थरे बैक स्टेज और फ्रंट स्टेज पळैलो 2 सेकंड पर तुमको करियर अछि 50 टा लोक होंतु कि 500 टा लोक तुमको अननै छन यू कांट लेट एनीवन डाउन so that is important that is what keeps us going to be very honest that uncertainty is so beautiful and pure see point of the time re that is what keeps us going see uncertainty एते सुंदर लगे हमें सेठी पई बंचू स्टेज को पळेली कोक थिला पड़ी गला ढाली गला स्टेज रे टोटल कपड़ा आनली पोछिली डायलॉग कहली सीन अलगा चलथिला मो करची अलगा करिया पड़िबो आई हैव टू क्लीन अप द एंटायर फ्लो otherwise तो करि परिबेनी ना स्क्रीन को इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट इट हैपेंस ऑन लाइव स्टेज प्रेजेंस रहया दरकार जदी सेटा तमे क्लियर करिबनी क्लीन करिबनी मु तापरे हील्स पिंधि के आछि मु खसी के पड़ जिबी सो यू हैव टू गोटे जगह रे केतले सी डायलॉग्स भूली गले कि मु कोन फंबल कर देली वी मैनेज सो मच एंड सेही जगह रे सबट बेसी हस आसे लोक भाबंती एटा तो बढ़िया से माने करले बट आमे दी जण ही जानथाउ कि कोन गोटे इंप्रूव होला आ बेसी कहबानी एठी हां ठीक है सब एक्सपोज कर दो तो सही वे रे देखियो स्टार्ट करी करेक्ट या Thank you so much, guys. It was a wonderful conversation with all of you. The only last message to our audience, what do you have to say, you know, World Theatre Day. So what is your last message to your audience? थिएटर टिके देखो भल आर्ट फॉर्म टा 5000 वर्ष बंची तो तार किछ गोटे रीजन अच्छी बही खातारू बाहरी की टिके सिनेमा फिनेमा भी देखिबा रील्स भी टिके कंज्यूम करिबा ता सहित थिएटर टाको भी बुझिबा काले बुझिजिबा थिएटर टाको जीवन यानी थिएटर केबे गोटे शो रे बुझी पारिबो नाही इट इज सेते पे थिएटर माने स्निपेट्स है कि रिलीज हुए ना यूट्यूब चैनल्स रे से गेम गिमिक हमें खेली परिबा बट हमें करूना कारण लोक मन नेक्स्ट रे सीतल कोन देखिबे दे हैव टू ड्विंडल दैट थिंग्स नीड टू रन इन द माइंड कोन थिला म बुझी पालिनी कहीं म आउ गोटे शो केबे हबो से शो म आउ थरे जिबे से शो देखिया पे आउ थरे बुझिबे से स्क्रिप्ट को बस गोटे प्ले को धर किंतु को बुझा कंप्लीटली बुझा लाइव परिवर्तन हबो हमरा हेछि हला तमर भी हम सब भल मनिस हो जाय तमर भी सब भल मनिस हो जियो थिएटर देखा सिंपल जिनस वर्ल्ड थिएटर डे रे एतिक मेसेज एज अ ओडिया हमकु टिके ओडिया पृथ्वी तो अच्छी अल्प बहुत हो पछे अच्छी बहुत तो आम ओडिया कम्युनिटी को बाहर एकाठी करबा को चाहूँ थिएटर गोटे माध्यम आसबे मिसिक देखिए किछटा लोक भीतर डिस्कशन सब कोलाबोरेशन सब मे भी लाइफ रे किछ गोटे चेंजेस आसीबो
दिजन कनेक्ट कले लाइफ रे किसी गोटे हेल्प आसी पारे तो थिएटर इज दैट मीडियम टू कनेक्ट पीपल टू ट्रांसफॉर्म पीपल टू एनरिच पीपल तो थिएटर तार काम करुच्ची लोक मैंने खाली आसिकी प्रेजेंसटा रखिले लाइफ रे भी सेति प्रभाव पकेबो मैं आशा करछि थिएटर लोग रिक्वेस्ट करंतिनी बिकॉज दे टेक प्राइड in their art form. It has existed for long, but I guess me being me, I would like to request youth, especially youth, because youth is what going to take the art form to the next generation, right? Also their active participation encourages us and motivates us. वर्ल्ड थिएटर रे मु एति कहबी ओडिशा स्कूल लक्ष्य माने नजर को आनी है कि लेट्स नॉट मिक्स थिएटर, लेट थिएटर स्टैंड एज एन इंडिविजुअल आर्ट फॉर्म कहीं ना जमी कहला कि सब जिन से लेवल आग को गले ही ऑडियंस माने आसवा स्टार्ट करेंगे जमी सिनेमा आम से ही प्रॉब्लम कि जब दुईटा भल फिल्म आसूँ ता भीतर 10टा खराब फिल्म आसी जाऊँगी तो सेटा ऑल टुगेदर बट से खराब ही आसूँ तो से नंबर ऑफ गुड एंड बैड से बैलेंस करा पड़ो कहीं एमती आइडियल स्टेज आसीपर सब चलो पड़े चलो बट ऑडियंस मैंने एजुकेट होती से जानूँ थिएटर कौन तो से जिनटा को आग को बढ़ावा पड़ो सो इन एडिंग टू दैट वी हैव आवर 2 शोज एप्रिल 8 रे दिल्ली रे अक्षरा थिएटर रे अपराह्न 4टा आ संध्या 7टा बेले 2टा शो अच्छी बुक माई शो रे टिकेट्स अवेलेबल अच्छी दिल्ली चेक इन करके आपन देखि परिबे एंड मे 13th रे रविंद्र मंडप भुवनेश्वर रे आषाढ़ के एक दिन रिटन बाय मोहन राकेश डायरेक्टेड बाय अभिनव राउतराय दैट बी प्रेजेंटेड बाय जीवन रेखा थिएटर ग्रुप दैट डिटेल्स आसीनी soon in book my show. Thank you so much and all the best for your future endeavors. Thank you so much. It's been Stay tuned to Orissapost Live for more such updates.